हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हम मैंने कौन करते? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेई लेक्चर्स कंप्लीट करते 2019, 2020 एंड 2021 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हां, यार जेई लेक्चर हमें कंप्लीट कर सके एंड बिफोर दैट और ता पूर्वरु हमें आईटीएफ पूरा खत्म कर सके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा चैप्टर हम खत्म कर सके, पूरा एक्सरसाइज एंड प्रॉपर्टी सहित। एंड बिफोर दैट वी हैव आल्सो डन रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन रो पूरा चैप्टर सहित हमें तार जेई लेक्चर मध्ये कर सके। जेई फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस एटा भी कर सके, राइट? तो टुडे इज द टाइम टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करियो एंड दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग ना। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी कहउछन ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एटा कोन? एटा गोटे लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम मतलब लीनियर कोन होची? लीनियर मतलब एक्सप्रेस्ड in the form of a straight line। माने केतरा स्ट्रेट लाइन थिवो, इक्वेशन दा पूरा जो क्वेश्चन दा थिवो से क्वेश्चन दा हमें केतरा इक्वेशन फॉर्म रे कन्वर्ट करबा। आ सब जा केमती इक्वेशन हेथियो, लीनियर इक्वेशन हेथियो। माने ताको लाइन रो फॉर्म रे हम एक्सप्रेस कर पारथि। तो प्रथमे हम कोन देखिबा चैप्टर रे? ए चैप्टर हम प्रथमे देखिबा जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। केतरा नुआ टर्म, न्यू टर्म्स हेगला। नुआ टर्म्स हेगला पर तापरे हम देखिबा हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी। गोटे एलपीपी टा गोटे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टा केमती हमें फ्रेम करबा, गोटे इक्वेशन टाइप, गोटे क्वेश्चन टाइप हम सेटा केमती फ्रेम करे। गोटे वर्ड प्रॉब्लम देखियो ना, से वर्ड प्रॉब्लम टा को हमें केमती तार एलपीपी रो फॉर्म रे फॉर्म करबा। आ तार फोर्थ पार्ट होची हाउ टू सॉल्व एलपीपी माने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बहुत इजी चैप्टर। एथरे किछि फार्मूला बेसिक कांसेप्ट्स ना, खाली प्रॉब्लम टा केमती देखा जाउछि, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमरो केमती देखा जो, आ सेटा यूज करी हमें प्रॉब्लम केमती सॉल्व करिया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड होची इंपोर्टेंट मेथड जोड़ा एग्जाम रे आछे। आ ये जो फॉर्मुलेशन भी कभी कभी छोटो क्वेश्चन रे आसी पारे, 2 मार्क क्वेश्चन रे, 3 मार्क क्वेश्चन रे आसी पारे। आज स्टार्ट करियो हमरो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच इज योर चैप्टर 3 हम स्टार्ट करियो। जदि चैनल रे नुआ छ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट इट विल रीच ऑल द ऑडियंस। तमर सांगा साथी समस्त पाक पहुंच परियो और समस्त यार बेनिफिट नै पारे। ठीक अछि। आ गोटे यार ए जो चैप्टर दा अछि लीनियर प्रोग्रामिंग, एटा जेई रे नाइ, तो ये चैप्टर पर यार जेई लेक्चर्स आसीबो नाही, डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर आसीबो तार जेई लेक्चर आसीबो जोटा कि मैट्राइसिस। हां, तो चैप्टर 3 स्टार्ट करिया। प्रथम देखिया कोन, फर्स्ट विल सी व्हाट द जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। गोटे एलपीपी कोन आ से एलपीपी केमती देखा जो, एलपीपी केमती देखा जो, तापर तार केते नुआ नुआ टर्म्स अछि, से नुआ नुआ टर्म गुडा सिखिया। देन विल सी हाउ टू फॉर्मुलेट, गोटे वर्ड प्रॉब्लम देइतो ताको हम एलपीपी रे फॉर्म रे केमती कन्वर्ट करियो। ठीक अछि, चलो बढ़िया आगे। फर्स्ट होची जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। जनरल फॉर्म कोन होची देखो, डेफिनेशन। जनरल फॉर्म होची ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑब्टेन। देखो एतकी वेरिएबल अछि, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? n नंबर ऑफ वेरिएबल। किंतु आमे ग्राफिकल मेथड रे केतरा वेरिएबल से तो काम करिया, हम ओनली 2 वेरिएबल्स है। कोन कोन से वेरिएबल? x1 एंड x2। गोटे वेरिएबल ऑफ x1 out a variable of x2 or one is x and the other one is y। x और y से हम काम करेंगे। किंतु जनरल फॉर्म रे, जनरल एलपीपी रे बहुत ओडे वेरिएबल होई पारे। कौन कौन से वेरिएबल? 2000 x1 x2 till xn। एठी कोन होची, गोटे फंक्शन एमती थियो z is equal to c1 x1, एमती गोटे फंक्शन थियो z equal to c1 x1, c1 c2 किछि नै, c1 c2 तार कोएफिशिएंट गोटा माने नंबर हेई पारे। कोन हेई पारे? नंबर हेई पारे।
तो नंबर जदि हम केमती हम z इज इक्वल टू बाबू मु एमती लिखली 2 into x1 प्लस 3 into x2 एमती हे पारे 2 3 हे पारे 2 minus 3 हे पारे -3 and 2 हे पारे जहां भी हे पारा सब्जेक्ट टू केते कंस्ट्रेंट दिया है सब्जेक्ट टू किछि कंडीशन दिया है कोन कंडीशन दिया है x1 x2 को नहीं किछि कंडीशन दिया था कोन कंडीशन दिया था प्रथम कंडीशन होची a11 x1 अगेन a11 a12 a13 till a1n ये सब कोएफिशिएंट होता किछि जदि मु लिखली देखो 2x1 plus 7x2 less than or equal to 40 एमती कोन लिखली इट लेस देन हे पारे ग्रेटर देन इक्वल टू भी हे पारे हां सेथरा इट देखो तीनटा सिंबल लेखा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और माने इधर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर अब कौन हबो सेटा का ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन रा आपन दिया है इधर डायरेक्टली क्वेश्चन को फॉर्म रे दिया है और हमें ताकू वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ी कि सेठी लेस देन हबो कि ग्रेटर देन हबो हमें डिसाइड करले क्वेश्चन कले जना ठीक अछि तो एमती केते इन कंस्ट्रेंट दिया है हमें जतले ग्राफिक इट देखो n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट अछि देखो m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट अछि m नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल केते अछि x1 तो नहीं कि xn पर्यंत माने n नंबर ऑफ वेरिएबल n variables and m constraints हमें जतले ग्राफिकल मेथड तो पढ़िया 2 और 3 इक्वेशंस मैक्सिमम तीनटा इक्वेशन पर्यंत हमको एग्जाम रे आसी है ना किंतु एठी काई ना से जनरल फॉर्म लिखछि सेथि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट केते अछि m और नंबर ऑफ वेरिएबल होछि n ठीक अछि तो एमती गोटे फंक्शन दिया है z और जाको हमें कौन करबा मैक्सिमाइज करबा और मिनिमाइज करबा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ताको कौन करबा हमें ऑप्टिमाइज है ना ऑप्टिमाइज दिस तो देखो जाको हमें ऑप्टिमाइज करबा काको हमें ऑप्टिमाइज करबा z को हमें ऑप्टिमाइज करबा माने तार कौन फाइंड करबा इधर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो जो z डा अछि याको हमें कहउछे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को हमें कौन कहउछे ऑब्जेक्टिव फंक्शन काई कहउछे ऑब्जेक्टिव फंक्शन Why this is called objective function? Why? Because our objective is to find the maximum or minimum value of z. Our objective कौन हमारा aim कौन है क्वेश्चन रे z रो maximum value find करबा या minimum value find करबा. Next z रो जो maximum और minimum value होबो या का ऊपर डिपेंड करियो देखो z का ऊपर डिपेंड करछि x1 x2 x3 और xn ये सब वेरिएबल एटा चेंज होतो कौन कांस्टेंट एठी c1 c2 सब कांस्टेंट c1 c2 till cn ए माने सब कांस्टेंट हां तो एगुड़ा फिक्स रहियो ये सब फिक्स रहियो ये सब फिक्स रहिला परे हमको कोन हबो हमको x1 x2 वेरी करियो कोन करियो x1 x2 वेरी करियो हां आ ता ऊपर डिपेंड करियो x1 x2 x3 till xn जो अछि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स या ऊपर डिपेंड करियो कि z रो मैक्सिमम वैल्यू कोन हबो या मिनिमम वैल्यू कोन हबो तो x1 x2 till xn ओनली दे विल डिसाइड कि z रो मैक्सिमम वैल्यू कोन हबो कि मिनिमम वैल्यू कोन हबो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स काइने डिसाइड z रो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को पॉइंट रे हबो x1, x2 रो वैल्यू कोन हबो से का ऊपर डिपेंड करियो x1 और x2 ऊपर डिपेंड करियो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स दे ओनली विल डिसाइड वेयर द वैल्यू ऑफ z विल बी मैक्सिमम और मिनिमम और c1 c2 till cn देखो c1 c2 दे आर कॉल्ड कॉस्ट कोएफिशिएंट्स वन कोएफिशिएंट्स नंबर्स कांस्टेंट्स अब ये जो सेट पूरा b दिया है ना ये जो इक्वेशन b पूरा कितना इक्वेशन दिया है देखो m नंबर ऑफ इक्वेशंस हां एटा कोन विल रिप्रेजेंट करा है इक्वेशन b दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स सेटा हम कोन कहले कंस्ट्रेंट बुझियो जी कंस्ट्रेंट्स एंड इक्वेशन c रे कोन अछि देखो इक्वेशन c रे हमर सिर्फ एटा अछि x1 x2 till xn will be greater than or equal to 0 हां ए माने नॉन नेगेटिव माने इधर 0 और पॉजिटिव x1 to xn रो वैल्यू कोन हो इधर 0 और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव से रेस्ट्रिक्शंस है तो इक्वेशन c जो अछि दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन माने दो सॉल्यूशंस वेयर x1 till xn आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब दे कैन नॉट बी नेगेटिव फिजिबल रीजन पे ये जो वेरिएबल अछंती ये वेरिएबल गुडा को नेगेटिव हेबे नाही त कोन टर्म्स हम पढले देखो गोटे टर्म पढले हमें ये सब इंपोर्टेंट मन रखो गोटे टर्म पढले z टा कोन कहउछ हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन काई z रो वैल्यू को हमें कोन करबा इधर मैक्सिमाइज करबा और मिनिमाइज करबा सो z हो गेला ऑब्जेक्टिव फंक्शन एटा होची इक्वेशन a रे अछि
Equation A रे अच्छे z objective function और जो equation B रे अच्छे set of equation they are called constraints याको कौन कहिए constraints माने conditions based on these conditions z is to be obtained और जो x1 x2 x3 till xn they are called decision variables और x1 x2 these all are greater than or equal to 0 याकू कहिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कौन कहिए याकू नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हां तो कौन कौन मन रखे z ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गोटे इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन काई कहउछि काई ना आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आउ डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट का ऊपर डिपेंड करियो कंस्ट्रेंट ऊपर डिपेंड करियो कंस्ट्रेंट कोन कंस्ट्रेंट होछि जो सेट ऑफ इक्वेशंस अछि ना b रे इन इक्वेशंस जोटे लेस देन अछि ग्रेटर देन अछि दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स हां ग्राफिकल मेथड हमें दुई या तीन टी कंस्ट्रेंट ऊपर काम करिया और c रे जो अछि माने x1 x2 till xn they are called decision variables and since they are always greater than equal to 0 से माने सब बेले कोन हबे 0 या 0 to अधिक हेबे they are called non negative restrictions ता कोन कहबा non negative restriction सेटा हमरा तळे सब एक्सप्लेन करा देखो decision variables are the values you seek to determine हम जोटा फाइंड करियो चाहू दो सेटा होचे x1 x2 रो वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने गोल we aim to optimize मतलब either maximize or minimize constraints माने non negative restrictions those variables need to satisfy माने x1 x2 सब greater than or equal to 0 ए कंडीशन दाउ से माने satisfy कर ठीक अछि तो हे गेला कोन कोन गोटे देइछो तुमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ केते सेट ऑफ कंस्ट्रेंट आ केते वेरिएबल x1 x2 till xn जो गोटा को नॉन नेगेटिव है ठीक अछि एमती रहयो तमरा जनरल फॉर्म ऑफ एलपी बुझिया आगु बुझिबा हां जदी जनरल फॉर्म एमती अछि प्रॉब्लम ता एमती अछि तार सॉल्यूशन रहयो तो तीनटा टाइप रो सॉल्यूशन रहयो कोन कोन जनरल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ एलपी नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन नंबर 2 फिजिबल सॉल्यूशन नंबर 3 ऑप्टिमम सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन माने कोन general solution means those solutions the values of the decision variables माने x1 x2 xn रो value the values of decision variables satisfied by the set of constraints जो constraint set अछि the values of decision variable satisfied by the set of constraint जो constraint अछि इक्वेशन b रे और set of constraint अछि the set of constraint satisfy करबा सब वैल्यू all those values are called general solutions सब को हम कोन करबा general solution करबा next comes your feasible solution माने those solutions where the values of x1 and x2 are greater than or equal to 0 माने जनरल सॉल्यूशन कोन रहो पॉजिटिव वैल्यू रहो नेगेटिव वैल्यू रहो 0 रहो सब रहो किंतु फिजिबल सॉल्यूशन रे ओनली दोज सॉल्यूशंस व्हिच इंक्लूड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दोज सॉल्यूशंस व्हिच आर नॉन नेगेटिव those solutions which are non empty solution जोटा नेगेटिव हेबे जोटा को नेगेटिव हेबे either positive or 0 are called feasible solutions optimum solution मतलब out of feasible solution जेतरा आछो से सब feasible solution रो को गोटी feasible solution एम्ति होबो जोठी z रो वैल्यू कोन होबो either maximum or minimum out of feasible solutions the solution at which z is optimum is either maximum
or minimum are is called optimum solution. तो कौन है जनरल कौन बुझले देखो एठी हम एटा बुझले कि जो जनरल सॉल्यूशन हो से सब को कंटेन करियो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब को कंटेन करले से गला जनरल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन माने आउट ऑफ जनरल सॉल्यूशन जते अछि से भीतर पॉजिटिव और जीरो माने नॉन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो को कंटेन करले फिजिबल सॉल्यूशन आ फिजिबल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन दा z को ऑप्टिमाइज करियो that solution is called your optimum solution. तो प्रॉब्लम हेगा तार ए टाइप रो सॉल्यूशन अछि जेतरा हम क्वेश्चन करियो हम बुझी परियो जनरल सॉल्यूशन कोन फिजिबल कोन ऑप्टिमम ठीक अछि खाली भी टर्म्स सब मन एबे देखिबा एतिके का बेसिक कांसेप्ट आ एतरे बेसिक कांसेप्ट्स नाही आ टाइप्स ऑफ एलपीपी जो अछि गोटे टाइप रो एलपीपी आमे क्वेश्चन तो गोटे टाइप रो बनवा किंतु से अलग अलग टाइप ना जेमति हे गेला मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हे गेला डाइट प्रॉब्लम हे गेला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हे गेला मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मतलब गोटे कंपनी थियो से केते टाइप रो गुड्स बनउथि सेटा हेला मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब दुईटा वेयर हाउस थियो दुईटा के तीनटा वेयर हाउस थियो आ गोटे बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट गोटे ट्रक कोन करथो एटू सेठी के जिंस नै कि जाय पर तो क्वेश्चन एमति दिया आइतो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y such that transportation cost will be minimum x और y रे एमती वैल्यू बाहर करो जोटी तमरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोन हो मिनिमम हो ठीक है सेटा डाइट प्रॉब्लम माने देयर विल बी ए सिक पर्सन गोटे रुग्ण लोक थियो ताकू डॉक्टर कहथियो कि तुमको ए मेडिसिन ए सब खाइबा पड़िबो प्लस डाइट कंस्टेंट डाइट माने तुमको खाद्य रो मध्ये ए फूड खाइबो किंतु कहीं ना लोकटा पाखरे पैसा नाही कि पैसा अभाव थियो कि कम पैसा थियो से कोन चेष्टा करियो सब डॉक्टर कोन जो जिंस कहचंती सब हम सैटिस्फाई करिया बट एट मिनिमम कॉस्ट दैट इज योर डाइट प्रॉब्लम तो ए टाइप रो प्रॉब्लम को हमें कोन करबा क्वेश्चन फॉर्म रे बनेबा को क्वेश्चन फॉर्म रे एलपीपी क्वेश्चन फॉर्म रे बनेबा आ ताको हमें सॉल्व करबा ठीक अछि एबे हमें सिखबा हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी गोटे वर्ड प्रॉब्लम दिया हाइथियो ताको हमें एलपीपी फॉर्म रे केमति कन्वर्ट करबा ठीक अछि दैट इज योर एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज 3A कोन दिया देखो एठी सब बेले क्वेश्चन पढला बेले जो डेटा आसो ताको अंडरलाइन करो डेटा को अंडरलाइन करो कोन डेटा देखो मु पढी जाउ छ जोठी डेटा मिलला मु ताको अंडरलाइन करो ए मर्चेंट सेल्स टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स x एंड y टीवी कोन बनउछि से टीवी बनउछि अब केतरा टीवी बनउछि दी टाइप रो मॉडल को टाइप रो मॉडल x टाइप रो हाउ y टाइप रो मॉडल को से कोन को सेल करछ मर्चेंट सेल्स टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीवी x एंड y दीटा टाइप रो मॉडल टीवी से सेल करछ एट 25000 माने x टा को जो x टाइप रो मॉडल टा टीवी ताकू से 25000 रो सेल करछ एंड y मॉडल टा को से 50000 रो सेल करछ पर सेट गोटे सेट है गोटे टीवी x मॉडल रो गोटे टीवी को से सेल केतरे करछि 25000 रे आ y मॉडल रो गोटे टीवी को सेल केतरे करछि 50000 रिस्पेक्टिवली ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ जेतले से सेल करछि सेल कला पर ता कोन मिलछि प्रॉफिट होछि केते प्रॉफिट होछि जदि x टाइप रो मॉडल गोटे पीस से सेल कला गोटे टीवी से सेल कला ताकू 1500 प्रॉफिट होछि वेर जदि y टाइप रो गोटे मॉडल को से सेल करछि ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 2000 say 1500 82000 on model of y the sales cannot exceed 20 sets in a month जो सेल अछि मंथली x और y मिसिक x टाइप रो मॉडल हो कि y टाइप रो मॉडल हो मंथली केते होबो cannot exceed माने याठू अधिका हबनी काठू अधिका हबनी 20 सेट टू अधिका हबनी this cannot exceed 20 if you cannot invest more than 6 लाख रुपया हां अभी देखो सेल जो करिवो इन्वेस्ट जो करिवो काठू बेसी से इन्वेस्ट करि परियो नै 6 लाख तो अधिक इन्वेस्ट करि परियो हां मोर देन 6 लाख हां ही कैन नॉट इन्वेस्ट 6 लाख रो अधिक से इन्वेस्ट करि परियो ना फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन देखो फॉर्मुलेट करिया हां फॉर्मुलेट माने याकू तुमको एलपीपी फॉर्म रे कन्वर्ट करियो पड़े फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ईच टाइप देखो माने x टाइप रो केते
y type रो number of sets of each type he must keep in stock for maximum profit. प्रॉफिट टाକୁ से मैक्सिमम करियो, प्रॉफिट टाକୁ मैक्सिमम करिया पे से स्टॉक रे केते रखियो माने व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. हां अब हम को आइ छी से स्टॉक रे कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स 20 सेट रो अधिक से पर मंथ ट्रांजैक्शन कर परियो ना. सो एटा जो क्वेश्चन दा देछि एटा को हम एलपीपी फॉर्म रे एलपीपी माने गोटे z रहयो किछि कंस्ट्रेंट रहयो किछि डिसीजन वेरिएबल्स रहयो. एटी डिसीजन वेरिएबल कोन x एंड y. व्हाट आर x एंड y? TV रो मॉडल one TV of model X and the other TV is of model Y. ठीक अछि देख कोन एट तो हमको डिफाइन करबा दरकार नै किछि काई ना x y से ऑलरेडी डिफाइन कर छ. तो हमें गिवन लिखता कोन लिख देबा गिवन x and y are the two types of TV models the merchant can sell to satisfy the above requirements and to maximize the profit अब देखो प्रॉफिट कौन होची सिंस प्रॉफिट कौन होची प्रॉफिट होची z केते होची देखो गोटे टीवी मॉडल x रो जो गोटे मॉडल से जदी सेल करछि ताको प्रॉफिट केते होची 1500 आ y मॉडल को जदी सेल करछि प्रॉफिट केते होची 2000 ना. प्रॉफिट z इक्वल टू केते हियो 1500 पर वन सेट ऑफ x. तो 15 into x गोटे टीवी जदी मॉडल x रो से सेल करछि ताको प्रॉफिट होची 1500 जदी से x नंबर ऑफ मॉडल को सेट कर. सिमिलरली जदी y यूनिट्स ऑफ मॉडल y को सेल कला तो गोटे यूनिट को सेल कले ताको प्रॉफिट होची 2000 y यूनिट को सेल कले हबो 2000 y. एटा हेला प्रॉफिट फंक्शन. आ याकू कोन करियार अछि याकू मैक्सिमाइज करियार अछि मैक्सिमम प्रॉफिट ना प्रॉफिट को मैक्सिमम कर एटा प्रॉफिट. सो देयरफॉर मैक्सिमाइज z is equal to 1500x plus 2000 y. एटा हेगला तमरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑल्दो हम एटे सॉल्व करिवानी किंतु एटा हम जो जनरल फॉर्म रे पड़तले एटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना. z हेगला 1500x plus 2000 y. कंडीशन कोन अछि कंडीशन अछि कि 20 सेट रो अधिका द सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन अ मंथ. जो सेल अछि पर मंथ 20 सेट रो अधिका हबो. देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन since sales cannot exceed 20 items per month. यार अर्थ कोन सेल्स टा मंथली 20000 रो अधिक 20 आइटम रो अधिक हो माने इधर 20 हो या ताठू कम. तो टोटल सेल केते हिच तारो x यूनिट रो सेल हिच x टाइम एंड y यूनिट रो सेल होच y यूनिट्स. तो x plus y should not be greater than 20 माने either it is less than 20 or equal to 20. एही हेगला गोटे कंस्ट्रेंट. ना आउ कोन कहै छी एंड इन्वेस्टमेंट केते कहै छी 60000 रो अधिक से इन्वेस्ट कर परियो नाही. तो जो सेल करछि से सेल केते टंका रे करछि देखो पछू जाई देखिबा गोटे टीवी जो x मॉडल रो टीवी टाकू से सेल करछि 25000
आ y मॉडल रो टीवी टाको से सेल करछि 50,000 हां तो केतरा टीवी सेल करछि x मॉडल रो x यूनिट y मॉडल रो y यूनिट हां तो x मॉडल रो x यूनिट x मॉडल रो x यूनिट y मॉडल रो y 25 and 50,000 तो 25,000 is the cost of one TV of model X तो केतरा टीवी से करछि x यूनिट तो टोटल कॉस्ट एति हेगला टोटल सेलिंग प्राइस एंड 50,000 पर टीवी ऑफ मॉडल y तो y टाइम केतरा हम करछ y यूनिट करछ एंड ए जो टोटल क्वांटिटी हो टोटल अमाउंट एटा टोटल अमाउंट दैट शुड नॉट एक्सीड केतरो अधिक हबन देखो 6 लाख रो अधिक हबन याठो अधिक हबन यार अर्थ कोन हम कम हबो या तो इक्वल हबो कम हबो या तो इक्वल हबो दिस इज 6 लाख 1 2 3 4 एंड 5 ठीक अछि तो 25,000 रे हमें डिवाइड कर दो कॉमन फैक्टर ता अछि so this is x plus 25,000 to divide कर इटा हेगला 2y this should be less than or equal to 25,000 रे डिवाइड करबा तो 3 हमर कैंसिल हेगला अब आपको 25 रे डिवाइड करबा 25 2 50 अब बढ़ला 100 and 0 25 4 तो इटा हेगला सेकंड and what are x and y since x and y are total units of type x and y model of TVs therefore they cannot be negative यार अर्थ जदि से माने नेगेटिव हेबेनी माने कोन हे इधर पॉजिटिव हेबे या तो x, y will be always greater than or equal to 0 हेगला तो हमें एटा लिखतले एटा को हमें गोटे थर रे कोन करिया एलपीपी फॉर्म रे लिखना तो फॉर्मुलेशन माने फाइनल आंसर हमें मैक्सिमाइज कागो मैक्सिमाइज करछो मैक्सिमाइज z को हम मैक्सिमाइज करने z रो फंक्शन हम पछर लिख एटा 1500x plus 2000y कोन हेगला 1500 into x plus 2000 into y so this is your objective function subject to constraint ना constraint को एमती लिखबे subject to the constraint this is the first and this is the second first one is x plus y less than equal to 20 and the second one is x plus 2y less than or equal to 24 it is a setup constraint and what are decision variables and both x greater than equal to 0 and y also greater than equal to 0 so यही हेगला तमरा फॉर्मुलेशन तो जो क्वेश्चन को देथिला आमी ताको कोन करले एलपीपी फॉर्म में कन्वर्ट कर है ना तो एटा हला हमरो फाइनल आंसर दिस इज योर फाइनल आंसर बुझिला तो क्वेश्चन जतेले पढियो सब टर्म को टिक मार्क करि चली टर्म को जति टिक मार्क करि चलियो गोटे गोटे इनइक्वालिटी मिलला देखो एठी हमको गोटे कंस्ट्रेंट मिल गेला कोन रेस्ट्रिक्शन गोटे हेगला एठी आ गोटे रेस्ट्रिक्शन हेगला एठी रेस्ट्रिक्शन कार टोटल अमाउंट से केते रखि पारियो एठी रेस्ट्रिक्शन कार टोटल केति कि से इन्वेस्ट करि पारियो आउ प्रॉफिट ता हम पछपट लिखछि बुझिला this is how to formulate a LP next question देखियो a company manufactures and sells two models of lamps L1 and L2 manufacture कला पर ताको सेल करछि कोटा को two types दीटा टाइप रो लैंप L1 and L2 the profit being rupees 15 प्रॉफिट केते होछ ताको 15 and 10 respectively माने जदी L1 टाइप रो लैंप गोटे से सेल करियो पर यूनिट ताको सेल के प्रॉफिट केते होची 15 रुपीस एंड L2 टाइप रो लैंप पे प्रॉफिट होची 10 रुपीस रेस्पेक्टिवली द प्रोसेस इन्वॉल्व टू वर्कर्स W1 and W2 who are available for this kind of work केते टाइप रो वर्कर्स ताको दरकार दीटा टाइप रो वर्कर W1 and W2 are available for this kind 100 hours and 80 hours per month respectively of W1
देखो W1 पाई जो वर्कर वर्कर W1 अछंती सेमानक पाई 100 आवर्स अवेलेबल अछि और W2 पाई 80 आवर्स अवेलेबल अछि। W1 assembles worker 1 type assembles L1 in 20 and L2 in 30 minutes। L1 माने लैंप 1 डाकू W1 वाला जो वर्कर अछि से 20 मिनिट रे बनि दोछि और L2 टाइप रो लैंप टाकू जो W2 अछि W1 अछि से 30 मिनिट रे बनि दोछि। सिमिलरली W2 कोन करछि बनेला पर W2 ताको पेंट करछि W2 पेंट करछि L1 टाइप टाको 20 रे और L2 टाइप टाको 10 मिनिट रे पेंट कर दोछि। assuming that all lamps made can be sold जेति के लैंप बनाबो सब जा बिक्री हे जो formulate the LPP for determining the production figures for maximum profit। तो देखो हमें कौन बनोचे हमें लैंप बनोचे ना वी आर फॉर्मिंग लैंप्स। लैंप कौन कौन L1 और L2 ए दी टाइप रो लैंप हम बनोचे करेक्ट। लेट अस कंसीडर L1 टाइप रो हम x यूनिट बनोचे और L2 टाइप रो कौन बनोचे y यूनिट बनोचे। अब यहाँ पे हमको कौन दरकार वर्कर 1 टाइप दी टाइप रो वर्कर दरकार W1 एंड W2। प्रथम टाइप रो वर्कर सेटा को बनोची से तयारी करछि आउ सेकंड टाइप रो वर्कर तो कोन करछि से लैंप ता तयारी हो सारा ताको पेंट करछि राइट। आउ W1 जो अछि ता पे अवेलेबल आवर्स केते 100 आवर्स अवेलेबल अछि नॉट मोर देन दैट एंड W2 टाइप रो वर्कर पे 80 आवर्स अवेलेबल अछि नॉट मोर देन दैट ए हला अवेलेबिलिटी। देन कम्स योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन होची जदी L1 टाइप रो लैंप गोटे सेल करछि तो प्रॉफिट कौन होची ₹15 और L2 टाइप रो गोटे सेल कले प्रॉफिट हेगला 10 है ना। नेक्स्ट W1 assembles देखो 80 अछि W1 assembles L1 in 20 and L2 in 30 minutes। W1 L1 को 20 मिनिट रे बनि दोछ और L2 को 30 मिनिट रे बनि दोछ। एटा 100 आवर्स अछि देखो एटा अछि मिनिट्स एटा होछि मिनिट्स एटा 100 आवर्स अछि यदि आवर्स अछि ताको 60 रे मल्टीप्लाई कर दवा 60 रे मल्टीप्लाई कर देले कोन हेगला 6000 मिनिट्स। सिमिलरली 80 into 60 equal to 4800 minutes हेगला। नाउ 20 30 हेगला W2 paints in 20 and 10 minutes 20 minutes और 10 minutes। तो एठी जो गुडा को दिया हितला हम सब गुडा जिंस लिखिबे तो देखो प्रॉफिट कोन होबो हम सब लिखिबे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एबे हम गोटे गोटे लिखिबे कोन लिखबे देखो let x and y be the units of lamps of type L1 and L2 are being made to satisfy the above requirements and to maximize the profit अब प्रॉफिट टा कोन करियो से मैक्सिमाइज करियो। प्रथम देखियो प्रॉफिट फंक्शन कोन अछि प्रॉफिट अछि गोटी को पर यूनिट 15 रुपीस। तो टोटल प्रॉफिट केते होला 15 into x plus 10 into y। तो मैक्सिमाइज z प्रॉफिट इज maximize z equal to 15 into x plus 10 into y। constraints कंस्ट्रेंट कौन लिखियो देखो W1 पे गोटे कंस्ट्रेंट अछि W1 कौन अछि 20 into x माने गोटे तयारी करबा पे लैंप 1 टाइप रो गोटे तयारी करबा ताको 20 मिनिट दरकार आ लैंप 2 पे केते मिनिट दरकार 30 मिनिट दरकार। तो x यूनिट बनोछि तो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट केते हिजो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट हिजो 20x plus 30y एंड टोटल केते अवेलेबल अछि 6000। हां आकू केते डिवाइड कर दो देखो 10 रे डिवाइड कर दो so this will be 2x plus 3y
less than equal to 600 है ना. Similarly and आ गोटे कंस्ट्रेंट अछि W2 पाई. W2 पाई कोन अछि 20x plus 10y less than equal to 20x plus 10y less than equal to 480. या को भी 10 रे डिवाइड कर दो. So this will be 2x plus y less than equal to 48. And what are x and y? They cannot, total units na, they cannot be negative. So x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. ठीक है. टेबल बने देले, टेबल रो सब डेटा लिख देले. एबे हम कोन करिया, फॉर्मुलेशन करिया. फॉर्मुलेशन रे किसे ऑलरेडी वी हैव डन. तो मैक्सिमाइज कागो मैक्सिमाइज करछे z को आ z रो फंक्शन हम 8 रखछे. Here the function is maximize z is equal to 15x plus 10y subject to 2x plus 3y less than equal to 600 eta. And the second one is this 2x plus y less than equal to 48. And what are x and y? X and y will be always greater than or equal to 0. ठीक है. This is what the formulation is. तो क्वेश्चन को पढ़ला बेले कोन करियो, जो जो डेटा गिवन अछि ताको हाईलाइट करियो. हाईलाइट कला पर कोन करियो, सर गोटे प्रॉफिट फंक्शन थियो या कॉस्ट फंक्शन थियो, कंस्ट्रेंट थियो, नॉन नेगेटिव रेशियो कोन कोन थियो, प्रॉफिट फंक्शन थियो या कॉस्ट फंक्शन थियो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज थियो, सब्जेक्ट टू केते कंस्ट्रेंट थियो जेमति एठी अछि डेटा कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस थियो. बस चल बुझि गेला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन पढ़ियो. A factory uses 3 different resources for manufacturing of 2 types of product. देखो केतेटा रिसोर्स यूज करछि, 3टा रिसोर्स. कोन पाई uses 3 different type of resource for manufacturing of 2 different types of products. दीटा अलगा अलगा टाइप रो प्रोडक्ट को तैयारी करिया पे 3टा अलगा अलगा टाइप रो रिसोर्स यूज करछि. 20 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स ए जो रिसोर्स यूज करछि तार ए टाइप रो जो रिसोर्स अछि तार 20 यूनिट यूज करछि. 12 यूनिट्स ऑफ बी टाइप रो 12 यूनिट्स, 16 यूनिट्स ऑफ सी टाइप रो 16 यूनिट से यूज करछि. बिंग अवेलेबल एतिकी अवेलेबल अछि माने से केते यूज करि परियो सेतिकी या ताठो कम. 1 यूनिट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो प्रथम प्रोडक्ट अछि, 1 यूनिट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 and 4 units of resource. The product 1 अछि से कोन करछि 2 to 4 units of resources. माने resources 1 जो अछि, resource A जो अछि तार 2 unit यूज करछि, resource B रो 2 unit और resource C रो 4 unit. And the resources and 1 unit of the second product कोन करछि 4 2 and 0 कोन यूज करछि 4 2 and 0 taken in order. It is known that the first product gives a profit. जो प्रथम प्रोडक्ट अछि से सेल कला पर प्रॉफिट केते मिलछि ताको 20 rupees per unit and 80 कोन मिलछि ताको 30 rupees per unit. Formulate the LPP so as to maximize profit. आगे टेबल बना दो. टेबल कोन करछते, टेबल कोन बनोछि प्रोडक्ट 1 and product 1 and product 2. Let x units of product 1 and y units of product 2 are being made. Then resource A, resource B and resource C. There are 3 types of resources available. Resource A, B and C. Availability केते देखो 20 units of resource A is available. 12 units of resource B. 16 units of resource. This is your availability. This is maximum availability. Maximum availability अच्छी अच्छी. ठीक है. चल next. 1 unit of the first product requires. Product 1 requires 2 units from resource A, 2 units of resource B, 4 units of resource C. And the second requires 4 of resource A, 2 of resource B, and 0 of resource C. Then comes your profit.
P1, product 1 is 20 rupees per unit and for product 2 is 30 rupees per unit. ठीक अच्छे आप याकू कौन करिवार अच्छे याकू फॉर्मुलेट करिवार अच्छे है ना टेबल बनी गला नेक्स्ट लेट x and y be the total units of product P1 and P2 are made to satisfy the above requirements. Satisfy the above, it define कर दो satisfy the above requirement and to maximize the profit. And to maximize the profit. Let us write the profit function first. Profit कौन है देखो profit अच्छी यदि 20 rupees per unit of P1 30 rupees per unit of P2 P1 रो गोटे यूनिट रो प्रॉफिट केते 20 rupees and P2 रो गोटे यूनिट रो प्रॉफिट हेगला 30 rupees तो केते यूनिट बनाई छी P x and y यूनिट ना तो 20x plus 30y maximize z is equal to 20x plus 30y conditions or constraint लिख दो constraint कौन अच्छे constraint एमती अच्छे this is 2x plus 4y maximum availability 20 तो कहते यूज कर परियो 20 or less than that तो 2x plus 4y this is for resource A 2x plus 4y less than equal to कहते अच्छे total 20 अच्छे ना less than equal to 20 2 रे डिवाइड कर दियो तो x plus 2y less than equal to 10 then resource B by resource B रे कौन थिला 2x plus 2y less than equal to 12 2x plus 2y less than equal to 12 2 रे डिवाइड कर दियो so x plus y less than equal to 6 then for resource C पे कौन थिला 4x plus 0y that is 4x only 4x less than equal to 16 4x less than equal to 16 or x less than equal to 4 eta hegla 1 eta hegla 2 और eta hegla 3 both x and y are greater than equal to 0 since they are the number of units therefore they cannot be negative एबे फॉर्मुलेट कर दो सब तो हे गेला ना फॉर्मुलेशन रे कम कर के मैक्सिमाइज एबे भी मैक्सिमम कर छे मैक्सिमाइज z is equal to 20x plus 30y subject to कौन कंडीशन अच्छी फर्स्ट अच्छी x plus 2y less than equal to 10 second अच्छी x plus y less than equal to 6 and third अच्छी x less than equal to 4 and both x comma y they all greater than equal to 0 एमती फॉर्मुलेट कर बुझी गला चलो I will do the next question next हम कौन देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ी जीवा वो हाईलाइट करके चलिए देखो कौन A man plans to start a poultry farm कौन प्लान करो गोटे पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करियो by investing at most माने बेसी रु बेसी 3000 he can buy old hens for rupees 80 each old hens से परचेज करियो 80 rupees per unit and young hens at the rate of 140 each ओल्ड हैन को 80 रुपीस रे परचेज कला और यंग हैन को पर यूनिट 140 रुपीस रे परचेज कला बट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 30 हैंस बट ता पाखरे जो रक्षा पे जो कैपेसिटी अछि जो घर अछि से घर भीतर से केति रख परियो
only 30, only 30. माने number of old hen plus number of new hen must be less than or equal to 30. केते रख परियो छे 30 या याटू कम. Old hen lay 4 egg per week. Old hen जो अछि weekly केते egg दोछि, केते अंडा दोछि 4टी, and young hen lays 5 eggs per week. And each egg being sold at the rate of 5. Each egg being sold at the rate of 5. If the cost rupees 5 to feed old hen and 8 to feed young hen per week. अंडा तो दउछि सेति पे खाइयो देबो गुडी. खाइयो देबो पे केते खर्च होछि? Old hen को 5 टका खर्च होछि per week and new hen को 8 rupees. Formulate this problem to determine the number of hens of each type. Number of hens of each type should be buy so as to earn profit more than 300 per week. जो profit हबो, profit केता हबो 300 per week तक profit हबो. Old hen, number of old hen X and young hen, total units of young hen को हम y नहीं जा. एबे देखो कोन कोन करियो. प्रथमे होछि से लोक पाखरे जो इन्वेस्टमेंट करियो केते टंका अछि ता पाखरे 3000 ओनली. एंड ओल्ड हैंड रो जो कॉस्ट होछि, ओल्ड हैंड रो कॉस्ट होछि 80 rupees. दिस इज कॉस्ट पर यूनिट एंड दिस इज 140 rupees कॉस्ट पर यूनिट. और ता पाखरे टोटल अछि 3000 rupees टू इन्वेस्ट. या तो अधिक इन्वेस्ट करि परियो ना. नेक्स्ट, ही कैन नॉट हाउस मोर देन 30 hens कैपेसिटी. cannot house more than 30 hens. तो number of old hen कौन होची x माने तार कोएफिशिएंट हेगला 1. number of new hen कौन होची y तार कोएफिशिएंट हेगला 1. एठी सब कोएफिशिएंट लिखाओ. अब एठी लिखाओ 30 माने 1 into x plus 1 into y. टोटल केते होची x plus y होबो ना. तो 1 into x plus 1 into y. now old hen lays 4 eggs per week. तो एटा हेगला तार प्रॉफिट या इनकम. प्रॉफिट या इनकम और इनकम कहि पारे. ओल्ड hen केते के दोछि 4 eggs per week and each egg cost rupees 5. तो 4 into 5 हेगला 20 rupees है ना. and young hen lays 5 eggs per week. 5टा egg दोछि young hen और each egg cost how many 5 rupees. तो 80 rupees हेगला 25 है ना. पोल्ट्री फार्म करियो इधर चिकन बिकियो न हला अंडा बिकियो आ कोन करियो. अंडा बिकु. तो एठी ओल्ड from old hen he gets profit of rupees 20 rupees per week and from young hen he gets profit of 25 rupees per week. and it costs rupees 5 to feed an old hen. Feed 5 rupees 5 per old hen and rupees 8 per new hen. कौन हेगला देखो एठी फीड हेगला. तो खर्च केते हेला तको पर वीक रुपीस 5. 85 खर्च केते हेगला रुपीस 8. तार इनकम केते हेगला 20 and 25. तो प्रॉफिट केते हेजो देखो से खर्च करछि 5 टका ओ कोन पे खाइबा को देबा पे आ तक प्रॉफिट होछि 20 rupees. तो 20 minus 5 20 minus 5 20 minus 5 माने कोन हेगला 15. आ एठी 25 minus 8 माने 8 हेगला 17. तो ओल्ड hen ताको एबे 20 rupees प्रॉफिट नो प्रॉफिट केते होछ ताको 15 rupees रो प्रॉफिट होछ. काइंड ऑफ से 5 टका खर्च कर दोछ ना फीड देबा पे. ठीक अछि एबे लेखिया. तो प्रॉफिट कोन करिवो 15x plus 17y. प्रॉफिट फंक्शन कोन हो 15x plus 17y. तो let x and y be the total units of old and new hen purchased by the man to satisfy the above requirements. To satisfy the above
requirements and to maximize the profit. And to maximize the profit. अब लिखो profit function. हाँ. Profit कितने गला? 15x z equal to 15x plus 17y. Condition. कौन पे condition? प्रथम हे गला cost. Cost कितने गला? 80x plus 140y and ता पाखरे total अच्छी invest करियो 3000 तो less than equal to that है ना? 80x plus 140y 80x plus 140y will be less than or equal to 3000. 20 रे डिवाइड कर दो तो ये गला 4x plus 7y less than equal to 20 रे डिवाइड कले 15 और 0 एटा 1 है तापरे हाउ कोन अछि देखो कैपेसिटी कोन अछि x plus y शुड हां x plus y माने नंबर ऑफ ओल्ड हैंड प्लस नंबर ऑफ न्यू हैंड will be 30. Number of old hand plus number of new hand x plus y less than equal to 30. How कौन अच्छी देखो formulate this problem to determine the number of hands he should buy so as to earn profit more than 300 per week. Profit कितने अच्छे profit function है गला 15x plus 17y. This should be more than 300. More than 300. And since x and y are the number of old and new hands purchased, they cannot be negative. They cannot be negative. I will like the formulation. देखो एक दिन से लिखा formulation है maximize z is equal to 15x plus 17y subject to 4x plus 7y less than equal to 150, x plus y less than equal to 30 and 15x plus 17y profit greater than or equal to 300. Both x comma y are greater than equal to 0. तो बुझियला एमती क्वेश्चन टाको पढी जो जो डेटा देछि ताको हाइलाइट कर दो हाइलाइट कला पर गोटे टेबल बने दो टेबल बने की सब लिख दो तापर फॉर्मुलेशन एटा होछ तमर फाइनल आंसर 2 या 3 मार्क्स रा आसपारे क्वेश्चन ठीक अछि आज हम कोन पढले जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी एलपीपी ता जनरली केमके देखा जो टर्म्स कोन देखले डिसीजन वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स ताकू यूज कर तापर सॉल्यूशन देखले सॉल्यूशन को टाइप रो देखले जनरल सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y तापर देखले फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड तापर देखले ऑप्टिमम वैल्यू माने फिजिबल सॉल्यूशन रो जो सॉल्यूशन दा z को ऑप्टिमाइज करियो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एथि के हम देखले तापर केते क्वेश्चन नेले हम एक्सरसाइज 3a रो कोन देखले सेगुडा को फॉर्मुलेट करले 1 2 3 4 क्वेश्चन देखले ठीक अछि नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करियो आगे प्रथम एक्सरसाइज अछि हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी तापर सेकंड एक्सरसाइज अछि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड सेटा हम नेक्स्ट लेक्चर देखि नेक्स्ट एमती 3-4 वीडियो हम बनेबा छोटिया छोटिया हां क्वेश्चन उडा को ठीक रे बुझबा और सॉल्व कर और जदी चैनल रो नुवा आछे चैनल टा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सो दैट इट विल रीच ऑल द ऑडियंस मैक्सिमम शेयर करियो लाइक कर जते बेले तुम्हें वीडियो देखछ वीडियो भल लागला लाइक बटन को प्रेस करियो शेयर करियो आउ बेल आइकन को प्रेस करियो सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट मिस वन नेक्स्ट लेक्चर आउ यार क्वेश्चन नंबर 5 रो में कंटिन्यू करियो टिल देन बाय बाय।